अभी वॉइस क्लियर है? यस मैम। लास्ट टाइम वॉइस नहीं आ रही थी क्या? मैम बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ओके, आई डोंट नो, सम टेक्निकल इशू वाज देयर। फाइन। क्लास में वो प्रॉब्लम पड़ी। तो लेट्स कंटिन्यू। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ इसको। Expected value of x. So this is actually the statistical average if random variables are involved there. So if x is a random variable, first we have taken x as a discrete random variable which assumes the values x1, x2, xn corresponding to the probabilities p1, p2 and pn. Then expected value of x, which is actually the mean for the random variable, or we have said that the statistical average, it's equals to summation of x p of xi, means multiplication of x1 p1 plus x2 p2 up to xn pn. So this is the value of expectation in case for the पीछे वाले बोल आ रही थी। in case for the discrete random variable, and if you are talking about a continuous random variable, then there is certain limits. So expected value of x will be equals to minus infinite to infinite x fx of x dx. Is that okay? Is this okay? Now, next is the expected value of a function of a random variable. Expected value of the function of random variable. Right. So suppose g of x is a function of a continuous random variable. G of x क्या है मेरे पास? Function of a continuous random variable x with, अगर वेरिएबल हम continuous की बात करते हैं तो उसके साथ क्या होता है? Probability density function, otherwise probability mass function. So with probability density function fx of x, then expected value of x will be equals to expected value of, यहाँ पर हम किसके लिए निकाल रहे हैं? फंक्शन के लिए. So expected value of g of x, expected value of g of x is equals to minus infinity to infinity, x की जगह अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? फंक्शन आ जाएगा which is g of x fx of x dx. So this is the value for the expectation. And in case for the discrete random variable के केस में क्या होगा? हमारे पास limited points होते हैं. So it's equals to summation of I varies from 1 to n g of x px of x xi. ठीक है, तो ये तो केस हो गया डिस्क्रीट के लिए और ये वाला केस हो गया कॉन्टिन्यूस के लिए. And this pxi is the probability mass function. Is this okay? Is this okay? अभी वॉइस आ रही है क्लियर? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास आता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स. तो टू रैंडम वेरिएबल्स मींस सपोज x एंड y मेरे पास टू रैंडम वेरिएबल्स दे रखे हैं, x एंड y विद टू रैंडम वेरिएबल्स. एंड अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करती हूँ तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है it's fxy xy, this is the probability density function continuous के केस में, and probability mass function in case for the discrete random variable. okay, तो इस केस में अगर दो वेरिएबल्स मेरे पास हैं,
सो लुक एट द एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे कैसे फाइंड आउट करनी है. It will be evaluated using the double integral. In case for the continuous variable, so limit from minus infinity to infinity. Expected value अगर मैं x की evaluate कर रही हूँ, so it's equals to x fxy xy dx dy. This is for expected value of x. Expected value of y की क्या हो जाएगी यहाँ से? Minus infinite to infinite y. This is fxy xy dx dy. अगर मैं इसी चीज को लिखती हूँ डिस्क्रीट के केस में, सो डिस्क्रीट केस में क्या हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द समीशन. ओके, सो दिस इज फॉर I j xi p xy probability mass function. So this is the expected value for discrete in case for the discrete random variable. In the same way, expected value of y is yi pxy xy. And one more thing, combined expected value of xy. अगर ये इवेलुएट करना है तो हम इसको कैसे इवेलुएट करेंगे? In case for the continuous variable, this is xy f of xy xy dx dy. And in case for the discrete random variable, this integral will be converted into the summation. So it's equal to summation of, this is I j xi yi. ये इसकी जगह क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. This is xi yi. This is also xi yi. So we have defined the expected value for simple variable, random variables, then expected value of a function of random variable, and then expected values of two random variables. Okay, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? इस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे लेटर ऑन. ये यहाँ तक किसी को कोई क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? Is this okay? वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? Voice is clear or not? Yes, ma'am. मैं अगर कुछ पूछ रही हूँ तो यू किसी एक को तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना, पता ही नहीं चलता है. ऑल्दो राइट इट ऑन चैट और बोल के बता दो. एनीवेज, नेक्स्ट वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यूज. properties of expected values. So first property is expected value of 1 is always 1. Expected value of 1 is always 1. It is, or we can say that the expected value अगर मैं किसी constant के निकालती हूँ तो उसकी जो expected value आती है वो constant ही आती है. ठीक है? So do remember these properties of the expectation. Now if a is not equals to 0 means it's a constant, then expected value of ax is equals to देखो ये इसकी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ax
एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, ये होगा इसका एक्सपेक्टेशन। अगर वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग ये मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, ए कांस्टेंट है तो आई कैन टेक आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन। और ये किसका फॉर्मूला यहाँ पर मेरे पास बन गया, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इट मीन्स expected value of ax is equals to a expected value of x. This is again property for the expected value. Next, suppose if x and y are two random variables and a and b two non-zero constants. Then expected value of ax plus minus by will be equals to a expected value of x plus minus b expected value of y. जो भी constant term होगी, we can take outside from the expected value. So this is again a property for the expected value. And in general, this property will be, suppose we have random variables, and we have n constants corresponding to the variables. इस तरीके का कुछ है, plus minus a2 x2 plus minus an xn. So it will be equals to a1 expected value of x1 plus minus a2 expected value of x2 plus minus an expected value of xn. So this is the general case. Now one more property we have. Please no need to write your attendance. I'm telling you again and again. किसी को required नहीं है अभी attendance लिखने की, मत लिखिए आप. I'm not going to consider this as attendance. Next property is, suppose we have two independent variables. Let x and y be two independent variables. Then अभी मैंने बताया था इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, वो ये होगी एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई. दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन केस फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं सेपरेट करके इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स एंड वाई एफ वाई ऑफ वाई डी वाई. So it becomes expected value of x, expected value of y, but the condition here is variable must be independent variables. So product of the expectation will be equals to expected value of x with expected value of y. Means suppose मेरे पास n random variables हैं, n independent random variables, then expected value of the product of all the variables will be equals to the, suppose ये मेरे पास n random variables यहाँ पर हैं, तो जो इसकी expected value होगी प्रोडक्ट की, it's equals to expected value of x1, expected value of x2, expected value of xn. So these are the important properties for the expectations. Is that okay? Is that okay or any doubt? Please let me know.
ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next is variance, and we will see some properties of variance also. Variance, we will define it for the continuous and the discrete random variable as well, and it's denoted by variance of x. अगर हम x random variable है यहाँ पर variance of x और sigma square of x, and it's equals to expected value of x minus expected value of x का whole square. Whole square. So in case for the discrete random variable, it's equals to summation of xi. This expected value is mu minus mu x square multiplication with the probability mass function. This is in case for discrete random variable. और अगर मैं continuous की बात करूं, then this summation will be limit minus infinite to infinite x minus mu x square fx of x dx. Okay, this is x, ये whole square यहाँ पर होगा. Now we have another form for the variance of x. जब हम इस whole square को open करेंगे, तो open करने के बाद this will be reduces in other form, and it's equals to, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, expected value of x square minus expected value of x का whole square. तो जब भी variance evaluate करना है, we can evaluate using this formula, expected value of x square minus expected value of x whole square. Next, we have some important properties for the variance, and this will be also useful in simplifying the problems. Properties of variance. So first property is variance of a constant. किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होगा? इट विल बी जीरो, क्योंकि अगर मैं सपोज 1 का वेरिएंस इवैल्यूएट करती हूँ तो यहाँ पर क्या होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1. कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कितना होता है? कांस्टेंट होता है, सो इट विल बी 1 माइनस 1. तो वेरिएंस ऑफ 1 इज ऑलवेज जीरो, और वी कैन से वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो. Variance of 1 is equals to 0. You can check that variance of 1 is equals to expected value of 1 minus expected value of 1 का whole square. और expected value of 1 कितनी होगी? It is 1, 1. So it's equals to 0. In this way, we can say that variance of a constant is always 0. Variance of any constant is equals to expected value. जब हमने constant की दी थी, तो expected value of constant is constant. But the variance of a constant is always 0. Next property is, if a is not equals to 0, a is a constant, then variance of ax is equals to, substitute it in the formula for the variance of a square x square minus एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax का होल स्क्वायर. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट में अभी हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा था, तो इसका क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, और वी कैन रीराइट एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का
होल स्क्वायर। इट मीन्स अगर मैं वेरिएंस इवैल्यूएट कर रही हूँ इंक्लूडिंग मल्टीप्लिकेशन विद कांस्टेंट टर्म, सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। इट मीन्स वेरिएंस ऑफ ए एक्स कितना हो गया मेरे पास, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। डू रिमेंबर इट ऑल्सो। जैसे सपोज मेरे को इवैल्यूएट करना है वेरिएंस ऑफ 4x, तो कितना होगा वेरिएंस, दिस विल बी 16 वेरिएंस ऑफ x फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। Next is, suppose a is not equals to 0 and b is any constant, then variance of ax plus b, what will be the value of variance? कितनी होगी इसकी variance की value, बताओ। What will be the value of variance here? अभी मैंने बताया वेरिएंस ऑफ ए एक्स कितना होगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट कितना होगा, 0. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ, ठीक है। तो ऐसे ही सपोज मैं यहाँ पर देखती हूँ मेरे पास 2 नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स हैं, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन वेरिएंस ऑफ ax प्लस माइनस बी वाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट मे नॉट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। ये किसी किसी कंडीशन में इक्वल होता है बट नॉट ऑलवेज इक्वल, प्लीज डू रिमेंबर इट, इट्स नॉट ऑलवेज इक्वल इन एवरी कंडीशन, ठीक है। पर्टिकुलर किसी कंडीशन में होगा एंड वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। सो next I am going to take a problem that is based on the mean and the variance of a random variable. क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, find the mean and variance of the random variable x whose probability density function is given by it's 2x when x lies between 0 to 1 and 0 otherwise। ये इवैल्यूएट करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है और मुझे उसकी यहाँ पर मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। सो expected value of x means, mean means the expected value of x and it's equals to continuous के case है यहाँ पर because we have a variable in case for the limits, so it's equals to 0 to 1 x fx of x dx. Is that okay? Is this clear? ये क्लियर है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी, एक्स मल्टीप्लीकेशन विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा। सो एफ एक्स ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, दिस इज 2x इन द इंटरवल 0 to 1 और इट्स 0 अदरवाइज, सो इट्स 2x x, इट मींस 2/3 x क्यूब 0 to 1 और 2/3। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर और ये क्लियर है? Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Evaluate करना है variance. Variance means sigma square x and standard deviation means square root of variance. ठीक है, अगर standard deviation
फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है, तो वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट इवैल्यूएट कर देंगे एंड इट्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स का होल स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 2/3 होल स्क्वायर. It means 0 to 1 x minus 2/3 whole square dx. This is the value for the variance, and open the whole square and evaluate it. So you will find out the value of the variance. So it's you just do it yourself, integrate karna hai sir, and after solving this you get 1/18 value. So just find it yourself. Clear? Is this clear? Yes, ma'am. नेक्स्ट एक और मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लो आप. यहाँ पर हाँ ओके, पहले शायद नहीं बताया था. कोवेरियंस इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशन. कोवेरियंस हमने पहले इवैल्यूएट करा था, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन इट्स वैल्यू इज, you just remember it directly, otherwise इसका प्रूफ भी अवेलेबल है, मैं प्रूफ आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है. तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, अगर एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल मेरे पास हैं, तो जो कोवेरियंस होता है उनका वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है. So in terms of expectation, we can also evaluate the value for the covariance, and if x and y are uncorrelated, uncorrelated means उनके बीच में कोई भी relation exist नहीं करता. So two random variables are said to be uncorrelated. यहाँ पर ऐसे लिख लो. Two random variables x and y are uncorrelated if their covariance is equals to 0. Means अगर two variables uncorrelated है, तो जो expected value of x y होगी that will be equals to expected value of x into expected value of y. ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास ये हो जाता है in case for the uncorrelated variables. And if random variables are orthogonal, note down one more point. If random variables are orthogonal, this is two random variables are orthogonal. Two random variables are orthogonal if expected value of xy is equals to 0. So do remember this one point. हाँ, और अब ये जो मैंने आपको एक वेरिएंस की प्रॉपर्टी बताई थी लीनियर कॉम्बिनेशन वाली, तो वेरिएंस ऑफ ax प्लस by की जो वैल्यू होती है इट्स इक्वल्स टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस 2ab कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये होती है, ठीक है. तो मैंने बोला था ये हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन में जो वैल्यूज होती है वो डेट मे नॉट बी इक्वल. तो इक्वल किस केस में होगी ये, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर ax प्लस by इज इक्वल्स टू, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर y प्लस 2ab कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई. सो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई.
So this is the general case, but this term will be 0 if variables are uncorrelated. Means अभी ये बताया मैंने, टू वेरिएबल्स जब अनकोरिलेटेड होते हैं तो कोवेरियंस 0 होता है. तो वेरिएंस ऑफ ax प्लस by की वैल्यू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y तभी होगी जब वेरिएबल्स मेरे पास कैसे हैं, इफ x and y are uncorrelated. अदरवाइज ये कोवेरियंस वाली टर्म भी यहाँ पर इंक्लूड रहेगी. इज दैट ओके? तो कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि मुझे जॉइंट में डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, तो ये कोवेरियंस इवैल्यूएट करना है, और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रखी है उसके हेल्प से कोवेरियंस इवैल्यूएट करना है, तो यू कैन आल्सो गो फॉर दीज फॉर्मूलाज. क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? Is clear? Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next class में हम continue करेंगे. We will see some problems and start with the binomial distribution. ठीक है? तो next class देखते हैं कब हो पाती है. तब तक आप क्या करोगे यहाँ पर? Just try to solve some problems based on the expectation and variance. Okay. Now please write down your attendance. Yeah, including your branch also.